नाही करताना. ओके, अगेन दीज आर व्हेरी बेसिक ऑफ आर्ट्स. म्हणजे समवेअर तो प्रोफेशनल असताना मी देखील मिस करतो, त्यामुळे सर डेफिनेटली आपण कुठेतरी रुटीनमध्ये मिस करतच राहतो. सो आयडिया इज हाऊ वी कॅन कीप प्रॅक्टिसिंग दिस अँड रोजच्या वर्कमध्ये कसं प्रॅक्टिसमध्ये आणू. कीप थिंकिंग दॅट की अच्छा हे पॉईंट कुठे येतात किंवा माझ्या वर्कमध्ये स्पेस हा एलिमेंट कसा एक मॅटर करतो मी जे काय करतो. कारण की आपले अगेन एक जरी टीम असेल त्यांचे ऑपरेशन्स वेगवेगळे आहेत. सी जीची टीम आहे, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन आहे, आणि प्रिन्सिपल कशा प्रकारे कुठे फिट होतात. कीप ऑब्झर्विंग ऑर कीप रिकलेक्टिंग दोज इन्फॉर्मेशन की माझ्या रोजच्या असाइनमेंटमध्ये कुठे येतं आहे. याच्या आधी आपण जे काय केलं ते कॅन एनिवन हेल्प काय लास्ट टाइम मी मला दाखवलं की ते असाइनमेंट त्याच्यामध्ये कलर स्कीम फॉलो होते. वी जस्ट डिड द असाइनमेंट वॉज ऑन मतलब हम लोग का सेशन हुआ कि हाउ कलर के बेसिक वो क्या है और कलर स्कीम्स कैसे बनेंगे. वैसे लास्ट टाइम वी सॉ दीज थिंग्स. डू यू feel this is getting connected to what I'm doing or not? मैंने consciously connect करना एक वेगळा, but subconsciously I am getting a feel कि हाँ ये तो मैं रोज करता हूँ, ये तो मैं वो करना था. So are you feeling that connection automatically? ये अरे नहीं तो फिर ये लेसन अलग है और मैं जो कर रहा हूँ तो इसका उसका कुछ मेरा देगा नहीं. अच्छा लास्ट टाइम का रिवीजन कर लेते हैं. वी सॉ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. फर्स्ट वो स्पेस, लाइन, शेप, फॉर्म एंड कलर एंड टेक्सचर. वी स्टार्टेड विद व्हाटएवर स्पेस कम्स फ्रॉम व्हाटएवर एरिया यू सेलेक्ट क्रिएट योर आर्ट. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ लाइन. इट कैन बी स्ट्रेट लाइन्स, स्लैंट लाइन्स, हॉरिजॉन्टल, कर्व लाइन्स, रेक्टेंगल. The line converts into a shape or form. Shape is a 2D thing, form is a 3D thing. Every shape or form has some color. Color automatically from black, white, red, green, all these subcolors is supposed to आते हैं. And then it has some texture. Okay, you will not find anything around, anything in this world जो इसमें नहीं बैठता. एक बॉटल घेतली आपण तर बॉटलला हा कलर आहे, त्याला काय स्मूथ टेक्स्चर, इट हॅज सम शेप, इट हॅज अ लाईन, इट हॅज अ स्पेस दॅट इट ऑक्युपाइज, पॉझिटिव्ह स्पेस किंवा नेगेटिव्ह स्पेस. यू थिंक ऑफ एनीथिंग एंड फिट इनटू दिस. तो बेसिक्स मतलब क्या कि व्हेन यू ब्रेक डाउन थिंग्स, जैसे म्यूजिक में सारे गमा से आगे कुछ नहीं है, जैसे कलर भी जो है ना जो 7 कलर का या प्राइमरी कलर्स और कुछ है नहीं. यू लर्न द बेसिक्स सबसे डन. आज हम लोग जो कर रहे हैं वो इट इज नॉट एलिमेंट्स, इट इज नॉट प्रिंसिपल्स. ये एलिमेंट्स हो गए. other principles. The first principle first principle is considered to be domination. What is domination? Domination is to dominate something में ये इसका एक importance create करना. To seize power of. To seize power. Create something which is overpowering the other elements in the design. If you see any painting or any even if you see the advertisements daily, you will look at them. But one thing has to be involved.
every film that you have seen, okay, almost every film has one single hero. कोई फिल्म में दो हीरो है, नहीं दोनों जीत जाते हैं, दोनों मरने पे. Okay, it will have one single hero or one single basic character जिस पे पूरा story revolve. So that is the first thing that you have to remember whenever you are creating any art, story as a film as a, or if you are creating advertisement, or if you are creating even a कोई शॉप का बोर्ड है, तो बोर्ड का डोमिनेटिंग एलिमेंट उसमें तो नाम लिखना चाहिए. सिंपल. ऐड के लिए मेरिटा चाहिए, ऐड है उसमें तो मेरिटा लिखना चाहिए. अच्छा, ओवर अ टाइम व्हाट हैपेंस कि थम्सअप है, तो थम्सअप कितना देखेगा. नाउ थम्सअप हैज टेकन हाँ टेस्ट द थंडर, फिर वो लिखना चाहिए. देन थम्सअप इज द स्मॉलर. फिर एक आ जाता है कि नहीं आजकल सलमान खान का दौर चल रहा है, तो सलमान खान लिखना चाहिए. Then taste the thunder is secondary, or thumbs up is still small. Because now you don't have to explain what is thumbs up. The thumbs up वाला मोटा दाखवाची गरज नहीं. इस मोटा दाखवाची नो. क्या उसमें कोई अलग USP नहीं है, उसमें कोई अलग फ्लेवर या कुछ नहीं. There is nothing to talk about thumbs up now. Now you have to target about ये सलमान खान है या whatever celebrity है model. So domination मतलब one thing has to be dominated always. Most of the art, basic paintings or ads or designs, whatever, domination becomes the first principle. The next is somewhat similar to domination. Okay, how is it similar to domination? Because again, isolation is also done to attract attention. It takes your attention. How does it take your attention? I think in class में मैंने बोला था, when everyone is shouting, the silence is heard. तो सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और कोई अकेला आदमी अगर कोने में जाके बैठा ना, he will get maximum attention. ये कैसे बैठा? ये कैसे शांत रह सकता? Everyone is fighting for everything. Everyone is fighting for their share. ये शांत कैसे बैठ सकता? Isolation is isolate. Isolate मतलब समझ लो. तो isolate yourself मतलब भीड़ से अलग होगा. So isolation becomes the second principle. Ultimately ये सगळं क्या होता है? What are the principles? Principles मतलब if you follow some basic things, तो तुम्हारा जो message है वो clear है. Either you have to try domination. 90% of the ads that you see today, maximum would are randomly doing ad, and you will see domination. कोई तो एक visual report रहेगा. Even if you see a long shot, सबसे पहला नजर किधर जाएगा? Getting dominated. Then the secondary thing. If this headline was important for them, अगर उनका पूरा USP ये line में ही होता, कि we are using the finest tea wood of Italy. Suppose this is a furniture ad, and the USP is we are using the finest wood in Italy. Then that headline would be dominated. ये मॉडल छोटी हो जाएगी. तो नहीं दिखाना है. Right side is dominated. Automatically और एक चीज अब ये सब एड्स देख रहे हैं you see कोई भी कंपोजिशन में vertically or horizontally divide this into 3 parts. ये भी हम लोग ने सबसे फर्स्ट लेक्चर में किया था. Ideally, if you divide this into 3 vertical and 3 horizontal parts, ये जो intersection आता है, these are called total points. So most of the layouts or the designs here that you will see, the center of attraction is not in the center. It is always on one of the golden parts.
ये कोई नहीं so this chair definitely ये chair पे पहला ध्यान है बाद में बात नहीं easily anyone can make out this is the first person and this is the second one सबसे पहला ध्यान इस पे है and he is not placed in the center he is on this कोई भी पेज ओपन करो ऑटोमेटिकली यू What happens if you don't follow? व्हाट इज आर्ट ये क्रिएटिविटी जो है इट इज अबाउट ब्रेकिंग द रूल्स बस बिफोर ब्रेकिंग द रूल्स मेक श्योर टू नो द रूल्स एक बार रूल्स समझ गए कि हाँ दिस इज समथिंग आई शुड फॉलो और फिर इसको थोड़ा सा So before doing that, these people already done all the rules करके बाद में कोई तो ऐसे and you can't do everywhere. It has its correct bang on time. वही करोगे तो उसका एडवांटेज मिलता है वो फिनिश करते हैं कि हाँ मैं नहीं फॉलो I just reminded me same discussion जब हमें भी था उसमें वही लोग पिकासो के पेंटिंग्स तो देखे रहेंगे हाउ वियर्ड दे आर और ऐसे लगता है कि मैं बचपन में यही बना था प्रपोर्शन ही पूरा वियर्ड जैसे आज मुझे just Google these guys are the insane example of breaking the rule of art. Now, these are his paintings. Especially this in the costed bomb, right? Can't even imagine. But this guy, his childhood time, जब वो 10-12 साल का था ना, that time he used to create painting like this, where everything was bang on, perfect, anatomy, principle. You can imagine at an early stage of life only he done all the study of art. And then somewhere he introduced in front of world कि ये भी आर्ट हो सकता है. He got almost 10-12 साल पे इसका क्रिटिसाइज चल रहा था क्या पागल जैसा काम करते हैं. But now he is one of the legend in art. So that is something first follow the rules, study principle study करो. उसका आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वही है कि at the age of small age only he done best of the जैसे डिटेलिंग होता है all the art principle follow करके उसने सब कुछ कर चुका था. Then he started doing this weird thing which had no logic. But that become his वही मतलब एक सडनली आइसोलेशन तरीके का काम कर रहा है. जब सब जन डिटेलिंग कर रहे हैं तो इसने एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि कुछ डिटेलिंग है ही नहीं एंड दैट बिकम हिज स्टाइल. बट ही इन्वेंटेड इट. आफ्टर दैट सो मेनी पीपल फॉलोड कंटेम्पररी आर्ट के नाम पे. इसके आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा. हिस्ट्री में जाओगे दैट इज हाउ आर्टिस्ट जनरेशन के बाद आर्टिस्ट बाहर आते हैं. समवन इंट्रोड्यूस और उसकी हिस्ट्री नहीं रहती उस टाइम विच साउंड्स वेरी इजी बट इन रियलिटी इज नॉट. वैसे ही भी एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग जो हम लोग ने शायद लास्ट फोटोग्राफ जो बात की थी 90 सेंस की ते पण जर आपण बघायला ऑल दिस इज द सेम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना. दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फोटोग्राफ. Can we believe this? इसका वैल्यू आराम से कुछ तो ऐसे 100 crores टाइप का प्राइस रहेगा just to buy this real art. And same with the उसी आर्टिस्ट का पहले वाला ये फेक है is not the ये दूसरे ना सर 100 cents. जो सुपर मार्केट रहता ना but this guy introduced the style of shooting this crowded thing but very symmetrical style. There are so many reasons, but again, no one can find this similar style has been invented by. अभी इसको follow करने वाले बहुत हैं इसके बाद में. And that's how these particular things become, unique or sell like anything or it has appreciate like anything. That's the difference between again. इसने भी देखो कुछ वो design के principle है ही नहीं. Law कुछ है, but yet there is a uniqueness. But इसके क्लिक करने के पहले I'm sure he must have researched and invented to reach this stage
रियली वांट ऐसे ही कि कुछ दिन दिखा और एक और कर लिया. So, see, recently I have you must have seen a lot of such industries. यहाँ पे मैंने Google में put down Picasso. I just put cubism. This era was called, this style is called cubism. और यहाँ पे Picasso आ गया. If you see, cubism came after Picasso. Picasso का ये जो style है ना, ये breaking everything into squares and triangles and separate उसमें है ना, started from portraits also. This later when people started following and इतना यूज हो जाता है कि उसका स्टाइल हो जाता है. अभी एडवर्टाइजिंग में we say negative space या white background या एकदम empty ads. वो दिस कॉन्सेप्ट में अपने कॉलेज में ऐसे सिखाते थे. empty ad ऐसा या फिर एकदम clean layout या छोटा लोगो ऐसा भी सब्जेक्ट नहीं. So how does it start? Someone has to do it first. किसी ने तो पहले किया है. Read these books. ओगिलबी इतना बड़ा नाम क्यों है? तो डेविड ओगिलबी जो फाउंडर है, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज. They were all not about domination. They were all about isolation. क्राउड से अलग ही करने का. Not keeping on shouting. तो domination तो सब लोग कर रहे हैं. तो those were the first ads की जहाँ पे उसने पोलो कार है ना, बहुत सारे या सगळे ॲड्स जर तुम्ही बघितल्या तर लेमन, दोज आर द व्हेरी फेमस ॲड्स ऑफ दोज 100 years back. बिकॉज एडवर्टाइजिंग वॉज मोर अबाउट कॉपी राइटिंग. और इसने स्टार्ट किया कि नहीं यार कॉपी कम करते हैं, जस्ट पुट 2 words और लोगो और छोटा सा. सी देन पीपल स्टार्ट रियलाइज अभी इतना हमारा हम लोग इतना मेहनत करके हमारा न्यूज़पेपर में ऐड दिखता नहीं और इसका दिख जाता है. Then people started following it. अरे निकाल दो कॉपी, अरे निकाल दो वीडियो, कम कर दो, छोटा कर दो, मत तो फॉलो होता. Someone has जैसे Picasso ने जो स्टाइल क्रिएट किया है, it became not just a style. because style is a very small word for us. अगर फाइन आर्ट किसी को मालूम है तो फाइन आर्ट में इज कॉल्ड isms. ism मतलब ऐसा होता है एक ism मतलब क्यूबिज्म. ऐसा बहुत अलग अलग isms. Now, just because we came out to this photograph, what is this? There is no domination, there is no isolation. Is there a design principle here? Can you make the photograph? It's a very common thing that we, everyone can see in the market. These are not like systematic at all, for sure. वो उनके mandates होते हैं. These are one shot picture. In fact, next principle is it doesn't get important. पूरा importance divide कर दिया. When you have 10 similar things, no one will get importance. वो कितना भी छोटा हो बड़ा हो कोई भी कर दे. So जानबूझ के जब repetition करते हैं मतलब क्या कि repetition. Tiles पे जो किया है, इसमें नीचे है सारे repeated.
though it's the tiniest element in the picture, or even if it is not the exterior, या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा नहीं मिलेगा, even if you take something in between, but the placement is such कि ये isolate हो गया तो इसको importance आएगा। तो इसका इतना बड़ा मास हो गया, इतना बड़ा वेटेज हो गया, These 2-3 elements are almost of the same value. Almost same. वो कैसा होता है पिक्चर में एक हीरो है और उसके बाकी 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो 2-3 फ्रेंड्स को सबको एक ही वैल्यू रहता है। It will not be a hit. Isolation plays a role here. Repetition. There were those diesel ads. Some diesel जो clothing brand है, उसके campaign बीच में आया था. It was just billboards and खाली बीच में font, this is a campaign. That's it. Like, those were, I can't find those campaigns, but there was nothing else on it. Like no imagery, nothing. Just like 14 words. This has eventually, but ये जो नीचे का part है ना, we've got more followers than diesel, and it was actually negative marketing. Like it was just like diesel 2016. माझं नाव मला पोहायला आवडतं, मला कविता लिहायचं नसेल खरंच शाळेत घाबरत नाही. पहिल्या लेक्चरला पुढच्या लेक्चरला वाचायचं. Like this was the launch party. So you see this huge font and black behind white font. So it's written, I can't stop flashing myself. So very bold statements which have nothing to do with the brand, and the white background is this black. If you're talking of advertising or branding, I think this is also one more thing that I remember we discussed for lecture. If you're talking of fashion brands are basically easy to advertise. So if you're talking about United PrincipleOfArt or even Ray-Ban or brands like Diesel, Spiker, so उसमें क्या होता है? The name itself is too big. ना Ray-Ban का ऐड करना है, you don't have to think much. एक सेलिब्रिटी लो, अच्छा फोटो शूट करो, but if you want to do an ad for Surf Ultra or Ariel, then it is difficult. From the advertisement, we are talking about advertising. Since we are discussing why that line or why did they put a blank wording, or if they are making statements like we have more followers than Diesel. तो वहाँ पे क्या होता है कि you talk anything, मतलब just attracting the attention is more important. It doesn't have to be classic every time. Attraction, in fact, मैंने mention किया है कि if you go to some university का जो syllabus होता है, if you apply for an entrance test, they mention कि आप अगर अपना portfolio भेजोगे तो उसमें don't send any fashion brand का ads, because even universities consider कि fashion is very easy to advertise. It is more about execution. It is actually good photography or not even good photography. Sometimes you might, because ये सब फोटोग्राफी के ब्रेकिंग के रूल्स आया कहाँ से? फैशन एड्स में सबसे फर्स्ट यू विल सी द ब्लर्ड इमेजेस, यू विल सी समथिंग अरे लोअर फोकस इज द हार्ट आउट ऑफ फोकस, दैट्स ऐसे इमेजेस यू विल नेवर फाइंड इन एफएमसीजी एड्स, कोई किसी में नहीं है. सर्फ अल्ट्रा और या फिर कोई ऑटोमोबाइल या स्कूटर दे कांट अफोर्ड टू डू दैट. फैशन कैन अफोर्ड टू डू एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाई इट इज सी. लेकिन इसमें क्या होता है कि इट इज लाइक सिर्फ पॉपुलर है डजंट मेक इट अ क्लासिक एडवर्टाइजमेंट. राखी सावंत के शो में ज़्यादा लोग जाते हैं
और सुरेश वाडेकर की शो में लिमिटेड फ्रेंड है, but that doesn't make that Rakesh Sawant is better than Suresh Wadeker. Pop culture is a completely different thing. Getting more likes on YouTube. Okay, some vulgar stuff on YouTube might get more likes than a classical song. That doesn't mean that is class or that is something to follow. So that's a different thing. And fashion में तो ये होता है. Fashion में some brands can do things for no reason. जैसे fine art में भी हुई है. Fine art में Hussain has done lot of paintings, but उसका सबसे ज़्यादा जो exhibition ध्यान में रहा वो कौन सा where he tore the papers, the canvas, फाड़ू spread करता है. The people and the critics and the fine art को follow करने वाली जो fraternity है, they remember that the most. समझा? उससे ज़्यादा और बहुत पेंटिंग्स देखी जिसमें उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई. So getting attract करने के लिए क्या तरीका यूज करना है. और sometimes brand reach a level कि जहाँ पे अभी brand के बारे में क्या पता है. Can you create something, some controversy. Basically a controversy. Fast track is doing good at it. They are pretty much following diesel strategy. In fact, there was a, if you really want to see this, United Colors of Benetton. That's Photoshop. I will be Google पे तो but these are original ads. This one Old ads are like those racism पे ज़्यादा थे. The hard one, the black, red. Basically racism को उन्होंने कभी मतलब skin बोलते हैं ना, white skin, yellow skin, and then black skin. And they're almost like yes 20-25 years old ads. So basically this guy has really bring that black skin model as a model. What is this image? This is just a big wall. Yeah, just out of the. See, it has nothing to do. No one can like जब भी ये ads when they didn't come into Indian magazines also. We saw them in art magazines. जैसे Archive वगैरह है उसमें पहले आए थे. We were wondering as Indian students because we are born and brought up in India. कि है क्या? What is this? It doesn't say clothing. It doesn't say accessories. What is it? It's a fashion brand. What is this? Can be completely uniform repetition. Can be sometimes ununiform repetition, but still is a repetition. If you see the catalog advertising, उसमें repetition होता है. If you see the Big Bazaar, DMart का जो ad होता है full page, that is a repetition. You can't say कि those are good ads or bad ads. But that ad requires that. That's called catalog advertising. ये ऐसा जितना भी ads होता है, it's called catalog because it is almost like a catalog which is printed in a newspaper. It is a catalog that comes in a magazine. अगर Fast Track ने ऐसा ad बनाया कि we are launching 20 new models this Diwali and one single press ad जिसमें सब models है and every model has a number and you can directly order online. So that is what is the requirement of the ad. हमको कुछ branding कुछ नहीं करना है. There is no celebrity that we have signed. ये 20 नए घड़ी आए हैं. Just put it there and people will order. So is it wrong or is it bad? It won't go for award. Sure. वो award के लिए नहीं जाएगा. और the art director who is working on that, he will be bored and क्या ये क्या 20 घड़ी की फोटो डाल के वो माला ले जाता. This one. It is not award stuff, but it क्योंकि उनका brief जो है वो उतना ही है कि हाँ ये है and it will be available online. उसका code number दे दो and people will buy. बस. So there is a requirement for such things a lot of times. Layouts में रहता है. Secondly, what is repetition? If you say what is this flow? This flow is a repetition. Every pattern that you see
most other patterns of clothing are repetition. How can you say कि अरे नहीं क्या make different 100 different lines and make a shirt? Why do you have to repeat? But repetition is required. Okay, repetition is a very important part. जैसा अगर black नहीं होगा तो white को कोई importance नहीं होगा. अगर अंधेरा नहीं है तो light को कोई importance नहीं है. वैसे because there are repetitive things in life, इसलिए dominating things जब आ जाते तो अलग है. Isolated कुछ हो जाते तो अलग है. Okay, since the ना आपल्या ताटामध्ये रोज का रोटी भाजी दाल चावल रहता है, इसलिए कुछ स्वीट डिश आते हैं, डेजर्ट आते तो अलग है. You can't have a थाली full of desserts. You can't have a थाली full of just spices. तो repetition ये जो है ना, ये जैसे I said basic elements जो होता है वैसा ये basic principle. Repetition you can't avoid repetition. You will require repetition sometime. What is this? This and this is repetition. ये मैगजीन के अंदर कुछ आर्टिकल्स है तो उसका ये 5 टॉपिक्स है. It has to be repeated. You can't have this. इसमें इसको पहले डोमिनेट करो, बाकी के 4 ही पढ़ो, या 4 को इधर रखो, इसको आइसोलेट करो. Every time domination and isolation will not work. Repetition is a necessity. Next is harmony. See, why are these in there's some order to it, there's some sequence to it. कि पहले कोई सिखाते समय कोई भी हार्मनी नहीं सिखाएगा, और if you go to some website and find out तो उनका हार्मनी पहले नहीं आएगा. Domination because yes, most of the things. See again, all these things are derived from nature. Nature में से ही derived किया, इससे derived. Domination, when domination doesn't work, isolation works. इसलिए isolation नहीं. Isolation, domination के बाद there has to be repetition. Harmony comes after repetition क्योंकि harmony is the next step of repetition. Let's say something like this. Repetition से added, there's something added to it. That something added is harmony. It is a repetition of squares, but it is in increasing order, or it is in decreasing order. Or if I do something like this. This is not just repetition. Repetition is harmony. Repetition तो है, some element is getting repeated, but still there is a harmony. Everybody goes from ascender to descenders to harmony. If it has some harmony can't come in. Let's say if we have something like this. No, I think I don't know what was, but it comes. जर तुम्हाला आपल्याला कॉलेजमध्ये असताना जो एस नजर फिरायची जी फॅक्टर असतो दॅट इज हॅपन. सो हाऊ यू कंपोज युअर एलिमेंट एक डॉमिनंट एलिमेंट म्हणजे you set the priority in your creative. Okay, these are my first priority, second priority, third priority is a element. It's not necessarily with repetition, but how you compose them, जो नजर घुमाने का तरीका होता है ना, that is harmony. If you and this principle I think applies everywhere. Why? Men posture and women posture, there is a difference because women has a harmony involved. Men has very straight geometry and women has a curvature. वो जो होता है ना, which makes more beautiful and attractive. That's how it's so not necessary. I think repetition असं नसतं ते. मला ते आठवतं ते एसचा फॅक्टर असायचा, सांगायचं की एस केले की नजर चांगली नाही. Harmony can be
Anything that is in gradation also comes in harmony. Whether it is going size wise, size में छोटे से बड़े जा रहे हैं या फिर like standard जा रहे हैं या अगर placement पे from top to bottom it is getting what Vikram is saying कि क्योंकि वो already जैसे उसका placing होता है ना अपना नज़र घूमता ही है. In this kind of design, no one will look at the ये sixth वाला जो square है उसको पहले देखा. Then I saw the ninth one, then I saw the third one. Not possible, can't happen. Okay, he's saying कि हाँ जैसे नज़र घूमता है, नज़र क्यों घूम रहा है? Because there is already harmony in some things कि हाँ या तो color wise रहेगा, tonal wise रहेगा, placement wise हो सकता है. But because there is some reason कि वो नज़र ऐसी, there's no chance कि you will look at this square first, then this square, then this. नहीं हो सकता. Again, see all this ये जिसने भी बनाया है, no one single person. You can't find the inventor of principles of design किसने बनाया या किसने लिखा. This is all evolution. माणूस कधी बनला असं कुठला एक वर्ष आहे का? ये साल में क्या होगा बंदर बंद हो गया और आदमी हो गया. It is the evolution of millions of years. That is the same reason is art has only people figure out formula, but you can't describe in a जो सर बोलते हैं 2+2 is 4 होता है वो नहीं कह सकते ना. अच्छा, in fact, you will also find these things. You go to Google और evolution कैसे होता है? How does language evolve? आपण याला पाणी म्हणतो. If you go to some सातारा सांगितलं, people call it पाणी. पाणी करेक्ट आहे की पाणी करेक्ट आहे? ते मला पाणी दे. पाणी करेक्ट आहे का? comfort and communication. It's more comfort. See, who can say that is wrong? You are saying it wrong because you are sitting here. पण मुंबईत लहानाचे मोठे झालो किंवा तुम्ही पाणीच ऐकलं इतके वर्ष म्हणून तुम्हाला पाणी रॉंग वाटतं. How can that be wrong? That's how language evolved. Right, because language has evolved everywhere. ऐसे नहीं कि किसी ने कोई तो एक हेड ऑफिस है लैंग्वेज का, वहाँ पे एक लैंग्वेज बना दिया एंड देन दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट. जितने भी मस्त है. समजलं म्हणजे असं काय नाही. अच्छा, आपल्याला वाटतं की इंग्लिश लँग्वेज स्टँडर्ड. यू थिंक इंग्लिश इज स्टँडर्डाइज? नो, नॉट एट फर्स्ट. इवन विद इन US ऑल्सो ना हर जगह क्या इंग्लिश अलग. आपल्याला वाटतं की अरे इथे मुंबईचा माणूस वेगळा बोलतो आणि नाशिकचा आणि पुण्याचा वेगळा बोलतो. बट इट इज हॅपनिंग ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. अगर स्पेन में स्पेनिश बोलते हैं, स्पेन में स्पेनिश बोलते हैं, वैसे हम लोग भी मराठी बोलते हैं, बट फिर भी डायलेक्ट अलग अलग है. It is because it is a result of evolution. It is evolved. जैसे मैं कहती हूँ shape and form. Some people call it shape, some people call it form. फिर अभी convenience के लिए इस चल तेरा भी मेरा भी. Kudi is a shape and it is a form. But it is again still evolving. और इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो अगले 20 साल में आएगी जो शायद ब्रांडिंग. It's very important point. अगले 20 साल में changes होते रहेगा, but this basic will not change, and that is what we mean. We need to make strong as team. ये basic strong रहेगा ना, कल को कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आने तो कितनी भी बड़ी आर्ट आने तो our basic is strong will not go wrong. Once our basic is strong, then we'll start breaking the rule. That day will be that we'll be doing experimental assignment as a collective as a team. This is the whole idea of this foundation course. Basic strong सगळ्यांचे आपले खूप झाले. So the reason मला सारखं जे वाटतं की आपल्याला हे डे टू डे असाइनमेंटमध्ये हाउ वी सी देम वेयर दे कम्स इन. फॉर एग्जांपल रिपीटेशन एंड जो करंट अभी असाइनमेंट जो अपना इसका चल रहा है स्विस टेम्पल, इज देयर एनी कनेक्शन?
you are a very that way servicing side person, but do you see any connection between Swiss temple and repetition or probably harmony? Because the whole assignment is full of that only, nothing else. And once R is so strong, then client will not say anything wrong because it has to lay down on that foundation. अगर हम लोग सिर्फ judgmental करने जाएंगे, देवेंद्र, so they will send the feedback. But when we do first strong foundation and then once we expert with, then we do little experiment with it, they will appreciate. Oh, कुछ तो अलग करके दिखा है. अलग is what? That is what. जो सब आर्ट स्टूडेंट करेंगे that is basic. But आपने कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करके भेजा, then client will appreciate art director. Who will understand. ये बंदे ने कुछ अलग सोचा है. That's how it makes difference when we. The last and most important principle is balance. Every art, every thing that has to stay has to end in some balance, some kind of balance. Symmetrical and asymmetrical. What is symmetrical? Symmetrical is anything that has one single axis. The left and right is same. The up and down is same. Even if you see a flower, so that's a radial balance. Which axis there are petals. What is asymmetrical balance? When one side is more than the other side. That's not equally divided. That's not equally divided. सब लोग ने Swiss temple.